Hi, this is Priya from Super 40 Bhubaneswar. We are going to explain this year 2024 NEET questions explanation by our GP Baliarasin sir. ठीक अच्छे बर्तमान आम R2 डिस्कसन करवा बलियार सार ये अच्छा एक्चुअली आम 45 डेज जो प्रोग्राम करूँ सुपर 40 तो बहुत पेरेंट्स और स्टूडेंट मैंने आसी जो 45 डेज भितर आम जो डिस्कसन करूँ 20 टेस्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आम करूँ जोटा कि ओडिशा प्रथम ऑर्गेनाइजेशन जे कि 20टा टेस्ट सीरीज देते अच्छा जो 20टा टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस करूँ तार मैक्सिमम क्वेश्चन आम प्रति सब्जेक्ट रू 5 रू डायरेक्ट क्वेश्चन आसी और 10 पाखापाखि खाली डिजिट जो चेंज होगी आसी तेणु आम जो बर्तमान डिस्कसन करवा से R2 सार डिस्कसन करेंगे देखा सार स्टार्ट करूँ जी आज हो पार नेक्स्ट टाइम आम भी से पूरा कंटिन्यू कर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करें Thank you, sir. Thank you. Thank you, dear students. I am Baliar Singh sir from Super 40. I 2024 NEET question one by one discussion करिया. R2 group रो question discussion करिया. Question number 1 from botany. Question number 1 from botany. The spindle fibers attached to kinetochores of chromosome during metaphase, anaphase, telophase, prophase. That is metaphase. So spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes during metaphase. Question number 2 or 102. Bullifan cells are responsible for. Bullifan cells कोथ में दायी protecting the plant from salt stress. एटा अपनी सॉल्ट स्ट्रेस रे बुलिफॉर्म सेल रो कोनस प्रकार रोल न थाए. क्वेश्चन नंबर 2 इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट्स से भी नुए प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर सेटा भी हबनी. नंबर 4 इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स ये होची करेक्ट आंसर. इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट दिस इज व्हाई टू रिड्यूस द वाटर लॉस. Then question number 3 or 103, the capacity to generate a whole plant. गोटे प्लांट रो गोटे छोटा सेल रु टोटल सेल टा टोटल प्लांट बॉडी टा डेवलपमेंट होबा एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन होबनी. गोटे सेल रु बहु प्रकार सेल होबा. गोटे सेल रु होल टिश्यू होल प्लांट बॉडी फॉर्मेशन होबा. एटा कोन को प्रकार फेनोमेनन एटा माइक्रो प्रोपेगेशन होबनी डिफरेंशिएशन होबनी somatic hybridization of that will be totipotency हैला. हमरो ह्यूमन बॉडी रे तो टोटिपोटेंट सेल अछि माने को जे स्टेम सेल. सो आंसर ऑफ टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी इज ए टाइप ऑफ सिस्टम इन व्हिच ए सेल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. गोटे सेल नु बहुत प्रकार सेल बाहर करियो. नेक्स्ट लो 104 ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. एटा ट्रांसक्रिप्शन जानि तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? Formation of RNA from DNA, that is transcription. Transcription unit in the DNA. DNA रो specific part of transcription unit को आजे जो part टा transcription हुए is defined primarily by 3 regions in DNA and these are with respect to upstream and downstream end. को gene रो arrangement एक होची structural gene, transposons, operator gene, inducer, repressor, structural gene ये भी होबनी ऊपरटा भी होबनी. प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर एटा ठीक है. आगे रहबो प्रमोटर तापर रहबो स्ट्रक्चरल जीन देन रहबो टर्मिनेटर. देन 105 एटा गोटे मैचिंग क्वेश्चन अछि. कॉलम 1 होला क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम साकारोमाइसिस सेरेविसिया ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज and you see column 2 ethanol, streptokinase, butyric acid and cyclosporine. So first Clostridium botulism, it is a bacteria. So Clostridium botulism produce butyric acid. The butyric acid source from Clostridium botulism. Then Saccharomyces cerevisiae, which is called as Baker's cyst or Brioche cyst. Saccharomyces cerevisiae
is called as Becker cyst or Brewer cyst. Becker cyst or Brewer cyst. It produces ethanol or ethyl alcohol. Then Trichoderma polysorum, which produces cyclosporin A. Cyclosporin A is an immunosuppressive drug which suppresses the immune system. It is very essential. This is given to the patient during the organ transplantation, because during organ transplantation immunosuppression is very necessary. Without immunosuppression, if the organ transplantation occurs, then it reject our killer T cells reject the new organs. Then Streptococcus species, streptokinase. Question number 106. এটা মধ্যে গোটে কম্বিনেশন কোশ্চেন, গোটে কলম 1 কলম 2 ম্যাচিং two or more alternative form of gene, cross of F1 progeny with homozygous recessive parent, cross of F1 progeny with any of the parent, number of chromosomes set in plant. So two or more alternative gene is allele, cross of F1 progeny with homozygous recessive parent is test cross of F1 progeny with any of the parent is back cross, then number of chromosomes set in plant, that is back cross. Okay, sorry, number of chromosomes set in plant, that is ploidy. Okay, bhalar mon rakho ame aaj discussion korche R2 ta dekho 107. Hence to always got the DNA molecule at a particular point called recognition sequence, and it consists of 6 BP, 4 BP, 10 BP, 8 BP. It has 6 BP, that is GAATTC. এই ভড়া গোটে মু एग्जांपल দউছি, GAATTC. These are called as palindromic site, right? Palindromic site, both are read same from both sides. Then 108. In a plant, black seed color capital B or capital B small b. This is black seed color is dominant over white seed color. This is dominant over white seed color, that is small b. White seed color. In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? That is this small bb, capital B small b, capital BB or capital B small b, and capital BB. Small bb. Answer 1. Small bb, answer 1. Then 109. These are regarded as major cause of biodiversity loss. What are the major cause of biodiversity loss? NCERT ର 12th biology देख हमर biodiversity chapter रे अछि 4 major cause of biodiversity. They are called as evil quadrant, and these are over exploitation गोटे अछि ऑप्शन मध्य co-extinction हबो, over exploitation हबो, mutation हबनी, habitat loss and fragmentation हबो, ए तीनटा हबो. आ गोटे ऑप्शन रहिनी जोटा कि कहती alien species invasion. So A, B and D এটা হবে करेक्ट आंसर. এটা রয়েছে 3 নম্বর অপশন রে 110. দেখো how many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in Kelvin cycle? এটা आंसर হবে 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH. গোটে कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पे for fixation of 1 carbon dioxide 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH are required. So option 3 will be correct. Then 111. Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? The Mendel's law of dominance पूरा NCERT based question एटा A option देइछि. Out of one pair of factor, one is dominant and the other is recessive. ये ठीक हबो. B कहला alleles don't show any expression and both the characters appear as such F2 generation. এটা ঠিক নাই, এটা ভুল হবো. C factors occur in pairs in normal diploid plants. Correct also. D the discrete unit controlling a particular character is called factor. ये मतलब correct है.
Then E, the expression of only one of the parental character is found in the monohybrid cross. ये भी ठीक है. So answer will be 1. A, C, D and E. देखो 112 नंबर क्वेश्चन टिके मु आउ थरे भी तुम कहूची हमर एटा R2 ग्रुप टा देखो क्वेश्चन रो जो कोड अछि R2 112 देखो लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज हमर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो अछंती सेटा तर लिस्ट ऑफ किए माने दी माने रिलीज बाय WWF FOM IUCN GAC now IUCN International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. Then next question 113, tropical regions show greatest level of species richness because अब tropical level टा कोटा से जोड़ा हमरा equator रो 23.5 degree north and equator 23.5 degree south सेटा को tropical region कहती एटा टिके टेम्परेचर अधिक रहइबो सेटा काहे की स्पेसिस richness ए एरिया देखा जाय तार कारण होला ऑप्शन डी ए ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स आर रिमेन्ड relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification. It is correct. Then tropical environments are more seasonal. Incorrect. Tropical environment are less seasonal actually. C, more solar energy is available in tropics. ये भी correct है. D, constant environments promote niche specialization. Correct है. E, tropical environments are constant and predictable. ये भी ठीक है. So answer टा कोड़ा हो एटा आंसर 4 हो A, C, D and E only हो. 114 match list 1 with list 2. List 1 nucleolus, centriole, leucoplast, Golgi apparatus, and list 2 site of formation of glycolipid, organization like the cartwheel, site for active ribosomal RNA synthesis for storing nutrient. ले देखो nucleolus का कौन हो site of active ribosomal RNA synthesis, centriole, organization like the cartwheel, leucoplast for storing nutrient, and Golgi apparatus, site of formation of glycolipid. Okay. Then 115. Which of the following is an example of actinomorphic flower? Actinomorphic flower means radially symmetrical. Actinomorphic flower is radially symmetrical flower. इस चैप्टर कोटा में actinomorphic flower Cassia, Sesbania, Pisum, Datura. Datura is an actinomorphic flower. Then 116. Identify the set of correct statements. A. The flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. Incorrect. As Vallisneria is an aquatic plant, it don't produce nectar, and this is not showy or conspicuous, and their petals are not colorful. So this is incorrect. B. The flowers of water lily are not pollinated by water. Not pollinated by water. Correct? Because water lily is pollinated by insects. C. In most of the water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. Sampurna ठीक है. D. Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like. This is also correct. And E. In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside water. ये भी correct है. So answer B, C, D and E. These are correct. The answer number 3. The 117. What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest, which is transferred into an alien organism? Option A. A piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism. Incorrect, because the desired gene can not replicate itself. So it can only replicate with the help of a plasmid. So this is incorrect. B. It may get integrated into the genome of the recipient. Correct. C. It may multiply and be inherited along with the host DNA. This is also correct. D. The alien piece of DNA is not an integral part of the chromosome. This is incorrect. And it shows the ability to replicate. This is also incorrect. So the correct answer will be B and C. This is in 2.
118. Given below are two statements. Statement 1. Parenchyma is living but collenchyma is dead tissue. This is correct. Statement 2. Gymnosperms lack xylem vessels, but presence of xylem vessel is the characteristics of angiosperm. This is also correct. So both statement 1 and statement 2 are true, which is in 4 option. Right? So please see the question set R2. So 119. Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cells is an example of redifferentiation, then de-differentiation, maturation, differentiation. The answer will be de-differentiation. 2. The 120. Which one of the following is not a criterion for the classification of fungi? So, during the fungal classification, we always focused on mode of spore formation and fruiting body and morphology of mycelium. These three are required. So, not criterion means mode of nutrition. The answer will be mode of nutrition. So, mode of nutrition is not necessary during the fungal classification. Then question number 121. The cofactor of the enzyme carboxypeptidase is. So, there are four options. Which is the cofactor for the enzyme carboxypeptidase. These are niacin, flavin, ham, zinc. The answer will be zinc. The 122. Auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass as auxin. The 1 promotes abscission of mature leaves only. This is incorrect. Does not affect mature monocotyledons plants. Correct. This is the correct answer. Because auxin or 2,4-D, the artificial auxin, does not affect mature monocotyledon plants. So, it is used by gardeners to prepare weed-free lawns. So, 123, a pink flowered snapdragon plant was crossed with red flowered snapdragon plant. What type of phenotypes is or are expected in progeny? This is from genetics. This is the question of incomplete dominance. So, if we cross pink flower means heterozygous, capital R, small r, within pink flower snapdragon crossed with red. So, two types of plant will get capital R, capital R, capital R, capital R, capital R, small r. So, 2 pink and 2 red. So, answer will be 1. Red flower as well as pink flower plants. Right. 124. Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? The dark reaction of photosynthesis means black band reaction or biochemical phase. Okay, biochemical phase use हुए light यूज हुए नहीं क्लोरोफिल तो हबनी क्लोरोफिल तो निहाती दरकार CO2 ATP and NADPH एटा आंसर हबो एनसीईआरटी बेस्ड जेतु क्वेश्चन दा एटा आंसर हबो ATP and NADPH data ATP and both ATP and NADPH are the product of the light reaction or the Hill's reaction or the photochemical phase, and these are used in the black man's reaction or the dark reaction. So D and E answer जोटा कि हम 3 नंबर ऑप्शन रही 125 टा देखो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 राइजोपस यूस्टिलागो पॉक्सिनिया आगारिकस कोटा हबो मशरूम हबो राइजोपस कोटा हबो ब्रेड मोल्ड राइजोपस टा हबो ब्रेड मोल्ड यूस्टिलागो कोटा हबो एटा हबो स्मार्ट फंगस and proxinia हबो rust fungus. Then 126 the lactose present in the growth medium of the bacteria is transported to the cell by action of एटा परमेज हबो एटा परमेज एटा हमरो मिली जिवो लैक ऑफ परमेज दा
127 गोटे इक्वेशन देखा द इक्वेशन ऑफ वान हॉल्स फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ dn by dt equal to rn into k minus n by k from the equation k indicates এটা ক্যারিং ক্যাপাসিটি হবে যেটা কি অপশন 2 রে আছে বায়োটিক পোটেনশিয়াল হবনি পপুলেশন ডেনসিটি হবনি কি ইন্ট্রিনসিক রেট অফ ন্যাচারাল ইনক্রিজ এটা হবনি आंसर হবে ক্যারিং ক্যাপাসিটি যেটা কি অপশন 2 রে আছে 28 নম্বরটা দেখো inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is classical example of feedback inhibition, competitive inhibition, enzyme activation, cofactor inhibition. এটা competitive inhibition হবে because competitive inhibition is extensively used in medicine, modern medicine and several antibiotics. Then question number 1 to 9, the type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called biodiversity conservation hobo baki alga option ro achi semi conservative method hoboni sustainable development ye bhi hoboni in situ conservation hoboni that is biodiversity conservation. Then 130 देखो एटी तो डायग्राम धीरे धीरे तमे एनसीईआरटी को चेक करो दीटा डायग्राम देछि जोटा कि फुलर जो तरी अछि डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स एंड द ओवरीज से ओवर रो पोजीशन ऊपर पछरछि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम विथ रेस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर ए एंड बी एटा हबो 3 नंबर ऑप्शन रे ठीक हबो बोथ आर पेरिजाइनस हो दीटा करे पेरिजाइनस हबो पेरिजाइनस माने को हबो एटा हाफ इंफीरियर ओवरी हो पेरिजाइनस इज हाफ इंफीरियर ओवरी 131 नंबरटा देखो गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स Statement 1. Bt toxin are insect group specific and coded by gene CRY IAC. এটা करेक्ट अछि एना Bt toxin जो अछि insect group specific जो प्रोटीन टा that is coded by the gene CRY IAC ठीक अछि. Statement 2 को कहूची Statement 2 कहूची Bt toxin exist as inactive protoxin ठीक अछि in B thuringiensis ठीक अछि. However after ingestion by the insect the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of the insect gut एटी भूल होइला एटा हम अल्कालाइन pH हिता तनो स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि किंतु स्टेटमेंट 2 टा रॉन्ग अछि सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false. Then 132 lecithin विषय में एटा बायोमोलिक्यूल आसला lecithin a small molecular weight organic compound found in living tissue is an example of eta phospholipid glycerides carbohydrate amino acid answer of phospholipids. Then dekho pile mane 133 so given below two statements statement 1 chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotin stage eta correct achi. Statement 2 ko कहला the beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex ये मध्य ठीक अछि तेनो एठी both statement 1 and statement 2 are true. 134 रो गोटे कॉर्न शीट देछि कॉर्न शीट रो सबडा देछि पॉइंट कोटा एतरे कोन हबो ना which is destined to form root when the seed germinate which part of the corn seed destined to produce the root देखा root टा कोड पर प्रोड्यूस हुए एटा रेडिकल तो रेडिकल टा के देखै जे सी देखै सी नाही रेडिकल सो आंसर विल बी सी. ता पर नंबर क्वेश्चन 135 रहिछि जोटा कि हमें देखिबा गोटे गार्ड सेल दीटा गार्ड सेल व्हिच सराउंड द स्टोमाटा पचरला इन द गिवन फिगर व्हिच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल सो ऑलवेज गार्ड सेल्स हैव आउटर थिन मेम्ब्रेन एंड इनर थिक मेम्ब्रेन सो आंसर विल बी सी. तो ऑप्शन 4 रे सी अछि. 136 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 ग्लॉट 4 इंसुलिन ट्रिप्सिन कोलाजिन लिस्ट 2 हार्मोन एंजाइम इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस enables glucose transport into cell. So what is the role of GLOT4? So GLOT4 is responsible for enables glucose transport into the cell. Insulin is a hormone, trypsin is an enzyme, and collagen
is intercellular ground substance. Right. 137. देखो तुम मैंने R2 टा चेक करो जो R2 कोड क्वेश्चन कोड अच्छे R2 टा चेक करियो सब बड़े नॉन लाइन इरेगुलर हो क्वेश्चन देखिए असुविधा हो 137 देखो साइट्रिक एसिड ग्लाइकोलिसिस ये होती लिस्ट 1 रो कॉलम 1 रो साइट्रिक एसिड ग्लाइकोलिसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोटॉन ग्रेडिएंट एपोटे कॉलम 2 रे देखि साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन साइट्रिक एसिड टा को साइट्रिक एसिड साइकिल एटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ग्लाइकोलिसिस ऑफ साइटोप्लाज्म देखो ग्लाइकोलिसिस गुड anaerobic process because it don't requires any type of oxygen it occurs in the cytoplasm then electron transport system that is inner mitochondrial membrane electron transport is present in the inner mitochondrial membrane and proton gradient develops intermembrane space of the mitochondria so why proton gradient is necessary do you know because proton gradient is necessary for the synthesis of ATP okay then 138 list 1 with list 2 Robert May Alexander von Humboldt Paul Ehrlich David Tillman column 2 space area relationship long term ecosystem experiment using outdoor plots global species diversity at about 7 million river proper hypothesis you see Robert May को estimate थिला global species diversity at about 7 million एटा होची Robert May को estimation था Alexander von Humboldt this will be species area relationship Paul Ehrlich river proper hypothesis and David Tillman long term ecosystem experiment using outdoor plots then question number 139 spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increase the length of the stem thus increase in the yielding सुना पले एटा हो जिब्रेलिन because जिब्रेलिन टा सब बेले कोन करे माने स्टेम रो लेंथ रे बढ़ियो इवन जिब्रेलिन इज एसेंशियल फॉर द एलोंगेशन ऑफ द एप्पल तो एटा जिब्रेलिन हो सुगर केन रो जो स्टेम टा लेंथ पाया पे हमें जिब्रेलिन यूज कर परिबा तो ऑप्शन नंबर 1 देन 140 ये भी गोटे माने दीटा कॉलम रो क्वेश्चन याको हमकु मैच करियो पड़िबो कॉलम 1 रे देला फ्रेडरिक ग्रिफ बी रेला फ्रांकोइस जैकोब एंड जैक मोनोड सी हेला हरगोविंद खोराना डी होची मेसेल्सन एंड स्टाल कॉलम 2 हेला जेनेटिक कोड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन लैग ऑपरन सो फ्रेडरिक ग्रिफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रांकोइस जैकोब एंड जैक मोनोड लैग ऑपरन हरगोविंद खोराना जेनेटिक कोड मेसेल्सन एंड स्टाल सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ओके देन 141 in an ecosystem if the net primary productivity टा भलो है मन रखो गोटे इकोसिस्टम रे if in the ecosystem if the net primary productivity NPP of the first trophic level is 100x kilocalorie per meter square per year what it the GPP means the gross primary productivity of the third trophic level of the same ecosystem देखो पहले NPP टा कोन ना net primary productivity जीपीपी होची ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अच्छा गोटे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होची टोटल बायोमास जति प्रोडक्शन हुए फास्ट ट्रॉपिक लेवल रे माने प्लांट जति प्रोड्यूस करे एटा जीपीपी रु जदि हमें माइनस करिबा काग माइनस करिबा रेस्पिरेशन टा माइनस करिया जोटा बळिला सेटा होची एनपीपी टा माने फास्ट ट्रॉपिक लेवल रे एनपीपी टा सेटा कोन हुए ना सेकंड ट्रॉपिक लेवल रे जीपीपी हे जाय तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल रे जीपीपी हबो तले एटा को हबो एटा 10% रूल रे हम करबा 10x किलोकैलोरी मीटर इनवर्स नो 10x हबो नो 10% कर तो 10x এটা x 10x হবে
the x kilocalorie per meter square per year hub. The one. Then identify the step in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate. देखो बोले succinic acid to malic acid एइदर ऑक्सीडेशन होउची से पछर सबस्ट्रेट को स्टेप रे ऑक्सीडेशन हुएनी सक्सिनिक एसिड ता मैलिक एसिड जेतर होउची सेतर मध्ये कोन होउची एटा ऑक्सीडेशन होउची अच्छा सक्सिनिल कोए जेतर सक्सिनिक एसिड होउची एतर हबनी एतर ऑक्सीडेशन किछि हुएनी आइसोसाइट्रेट मध्ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड की जेतर कन्वर्जन होउची एतर भी ऑक्सीडेशन हुई मैलिक एसिड मध्ये ऑक्सैल एसिड की जेतर एसिडिक होउची सेतर मध्ये ऑक्सीडेशन हबो. The answer number 2, succinyl CoA to succinic acid. Then 143. Which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plant? That the answer will be somatic embryo, protoplast, pollen, callus. Protoplast. Option number 2. Then 144. Types of stamen and example. Monodelphous, diadelphous, polydelphous, epiphyllous. देखो monodelphous माने बुझियो पड़ो. What is monodelphous? जदि स्टामेनोटा गोटे बंडल रहइबो ताको मोनोडेल्फस को डाइडेल्फस जदि स्टामेनोटा को दुईटा बंडल रे अरेंजमेंट हेकि डाइडेल्फस पॉलीडेल्फस मोर देन टू बंडल रे अरेंजमेंट हेकि पॉलीडेल्फस मोनोडेल्फस ता हबो सबले चाइना रोज ता हबो मोनोडेल्फस पी ता हबो डाइडेल्फस पी ता हबो डाइडेल्फस पॉलीडेल्फस साइट्रस हबो एपिफाइलस एडा हबो लिली 145 read the following statement and choose the set of the correct statement in the member of Phaeophysia पिला माने Phaeophysia होची ब्राउन algae लो कोटा देखा स्टेटमेंट होची करेक्ट स्टेटमेंट asexual reproduction occurs usually by biflagellate zoospore ठीक अछि sexual reproduction is by oogamous method only ना एटा करेक्ट होबनी इनकरेक्ट होबो oogamous हे परिबो isogamous हे परिबो anisogamous भी हे परिबो तो एटा भूल अछि सीटा द stored food is the form of carbohydrate which is either mannitol or laminarin ये करेक्ट अछि डी हैला the major pigment found are chlorophyll A and C carotenoid xanthophyll ये भी ठीक अछि vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on outside by gelatinous coating of the algae ये भी ठीक अछि तो आंसर कोड आबो A C D E एटा ऑप्शन नंबर 2 आबो 146 देखो which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli process of replication in E. coli replication process कोड ठीक अछि the DNA dependent RNA polymerase catalyze polymerization in one direction that is 5' to 3'. एटा इनकरेक्ट हबो कोनटा इनकरेक्ट हबो the DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in one direction that is 5' to 3'. एटा भूल हबो काई भूल हबो एटा RNA polymerase ता करेनी एटा DNA polymerase करे the DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5' to 3' as well as 3' to 5'. एटा भी इनकरेक्ट हबो the DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5' to 3' एटा ही ठीक हबो 147 देखो the DNA present in chloroplast is एटा सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड हबो आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर 148 नंबरटा देखो ए जो डायग्रामटा देइछि एटा पिले देखो wind pollinated plant inflorescence showing flowers with well exposed stamen option number 4 149 देखो given below two statements statement 1 को कहला in C3 plants जानि दिबो some O2 binds to rubisco hence CO2 fixation is decreased in C3 plants some O2 binds to rubisco hence CO2 fixation is decreased eta incorrect अछि eta incorrect ho. In C3 plants some O2 bind to rubisco
हाँ ये करेक्ट अच्छे C3 plant hence CO2 pieces decrease. Statement 2 in C4 plants mesophyll cells show very little photorespiration while bundle cell don't show photorespiration. এটা incorrect আছে in C4 plant mesophyll cells show very little photorespiration while bundle cell don't show photorespiration. So both are correct. Option 4 match list 1 with list 2 rose, pea, cotton, mango, twisted aspiration, perigynous flower, droop, marginal placentation. So rose ta habo perigynous flower, pea rose ta holo perigynous flower, pea hochi marginal placentation, cotton hochi twisted aspiration, mango hochi droop. आज आम बटनी क्वेश्चन डिस्कसन कर दे नेक्स्ट टाइम पुणी आम जूलॉजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा।